guys, welcome back to my channel. आज मैं start करूँगी अपने face cleansing से first. That I am going to be using the Biotique Bio White face wash and मैं इसे अपने face पे लगाऊँगी. And I'm also going to be using this Spalife electronic tool. So with the help of this tool, it's like this. As you can see, so this is the tool. So there are 4 things over here. 1, 2, 3, and there was one more. I don't know एक कहाँ गया. So मैं इसे इसमें लगाऊंगी like this. इससे मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लेंस कर सकती हूँ और जितने भी डर्ट पार्टिकल्स मेरे ओपन पोर्स के अंदर होंगे वो मैं बहुत इजीली एक्सफोलिएट भी कर सकती हूँ. और ये बहुत ही इजी है यूज़ करना. ये मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ. इट्स लाइक मंथ में मैं 2 बार यूज़ करती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. बहुत ही कम अमाउंट का ये क्लेंजर लूँगी अपने फेस पे और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ सम वाटर ऑन माय फिंगर्स. मैंने अपने फिंगर्स में थोड़ा पानी लगाया है ताकि इसे थोड़ा सा वेट करके मैं इस क्लेंजर को लगाऊँ. माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो मैं इसे बहुत देर तक नहीं करूँगी, अदरवाइज़ मेरी स्किन पूरी रेड हो जाती है एंड बाद में थोड़े बहुत रैशेस भी आ जाते हैं. मैं इसे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करती हूँ. सो दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन नाउ. अब मैं इसे अच्छे से क्लीन करके देन आई विल बी बैक विथ यू. मैंने अपना फेस अच्छे से क्लेंस कर लिया है. सो मॉइस्चराइज़र क्रीम के लिए आई एम यूजिंग दी लैक्मे पीच मिल्क. दिस इज़ द मॉइस्चर लॉक एंड इट्स रिटन हियर 24-hour मॉइस्चर लॉक. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन. आई हैव नेवर ट्राइड दिस मॉइस्चर. आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई होप इट इज़ गुड. So winter season has started, so obviously your skin needs a good moisturizer. होगा कि मैंने cleansing किया but मैंने toning नहीं किया. Cleansing के बाद I straight jump to the moisturizer. What I really like to do is I do cleansing and then I apply moisturizer and then मैं उसके ऊपर से मैं toner स्प्रे करती हूँ. सो द टोनर विच आई एम यूजिंग इज़ द लास्ट कुकुम्बर मिंट. सो मैं इसे अपने मॉइस्चराइज़र के ऊपर स्प्रे करूँगी लाइक दिस. दिस इज़ अ रिफ्रेशनर टोनर और ये आपके मेकअप को सेट भी करता है. So now I'm going to start with my brows. So for the brows, as usual, I'm going to start with the Maybelline Eyestudio Eyeliner Gel. अब मैं स्टार्ट करूँगी अपने आईलिड से. अप्लाई द रेवोल्यूशन Conceal and Define Concealer and this is in the shade C5. To set my base with the compact powder and here I'm using the Nykaa compact powder. Now I'm going to take the Makeup Revolution Sophx eyeshadow palette and this is the Extra Spice palette. The first shade I'm going to take is the Vitamin C as a transition shade. Now with the same blending brush I'm going to take the shade Running Late. Then I'm going to take Cheesecake. This is a beautiful deep brown shade. The Makeup Revolution Concealer. Apply here at the lid. It's going to be like sort of cut crease.
going to take the Larson shade from this Makeup Revolution palette. Just going to blend everything out. Focallure eyeliner. This is the eyeliner pen. So I'm going to use the cheesecake on my waterline. Using Dell Studio Effects, and these are the wispies. Now for the foundation, I'm using the Nykaa Skingenius. This is in the shade 01 Pure Ivory. I'm going to take this on the back of my hand. Then I'm taking the Krylon sponge and I'm just going to blend this in. Then I'm taking the Nykaa foundation powder, and this is also in the shade 01 Natural Ivory. For the blush, I'm taking the Maybelline Colorshow blush. This is in the shade Creamy Cinnamon. And for the highlighter, using the Maybelline Masterchrome, and this is in the shade Molten Gold. Apply on the high points of my face. For the lips, I'm using Lakme 925 Primer Plus Matte Ruby Rush lipstick. Then I'm going to apply this Inglot Sleek Gloss.